Hey guys, welcome to Traveling Rocks. Today I'm traveling Vienna airport to Bratislava and using RegioJet bus, and the bus ticket price is very cheap, just only 7.90 euro, and I'm booked this bus as a return. Morning 9 o'clock I'm traveling Vienna to Bratislava, and afternoon 7 o'clock to 8 o'clock I'm come back here Bratislava to Vienna Central using same bus, and my return journey ticket just only less than 20 euro. So let's start off beautiful journey with RegioJet bus. Dobrý den, sedadlo 19 vepředu. The bus is a start Vienna airport, parking K4. Now my journey is starting Bratislava using the beautiful bus. Open the Google and type Vienna to Bratislava. Flixbus is also available and the other website. I prefer most of time in a train line, this framework, and that one is really amazing, like Vienna Central to Bratislava. If I search here today, go with that. So here several options are available here, comes in like a train and buses. So I prefer this one because of this is one of the cheapest public transportation. This bus going to central train station as well as airport also. I take this bus from airport and I am reaching in Bratislava just only 14 minutes. छोड़ देते आप क्या थे फिर मैंने तो लग 10 सेकंड में प्लान बना दिया, बचा हुआ देख लेंगे ज़्यादा. लग गया ब्राटिस्लावा भाई, ये सिटी मिल जाती है, मुझे लगा ये सिटी जाती है ना. अरे ये तो 40 मिनट में पहुंच जाती है. Vienna airport to Bratislava central train station, journey just only 40 minutes via bus, and ticket price is very cheap. I purchased this ticket around for 2 persons in 14 euro, like a 7 euro each, and the journey time is just only 40 minutes, so you can very easily reach there and explore entire day. Bratislava capital, Slovakia capital is Bratislava, and then return back to Vienna in evening. मैं देख रहा था कि बस का लोगो क्यों दिख रहा, बस टैक्सी उधर दिख रहा नहीं था, बस टैक्सी सारा है. तो 4 बार 1 मिनट क्या कर रही है अपन तो बूढ़ा हुई चल रहा है.
Welcome to Slovakia. This is the border, Austria and Slovakia. बॉर्डर के नाम पे क्या है, बंदर अभी नहीं है. तो वो बेचारा कितनी बार कोशिश करता है, वो औरत ने बहुत सही एक्टिंग की वो पिक्चर में. मैं तो उसका फैन ही हो गया. जिस तरह से उसे प्रिटेंड किया है, उसको बच्चा रहता है, उसको ये करती. उसका पति, वो तोशी है, वो उसके पति की याद दिलाते मुझे कभी कभी. बट तोशी बहुत ही गई गुजरी है. Welcome to Slovakia, Bratislava. हाँ? बहुत दबा के वो भी. और वो 15-15 मिनट में इसलिए वो भी बहुत जल्दी हो जाता हो टूर. Welcome to Bratislava. Satellite. उधर ही छोड़ रहा हूँ. वो तो हाईवे था, मुझे लगा बाप वहाँ छोड़ के अपने को उसके आसपास छोड़ता हूँ. अच्छा ये ब्रिज है वो इसके ऊपर. Я поняла. Все, мы посмотрели на город, да? कैसे बनाते हो वहाँ कुछ वो रास्ता बना रहे हो तो पहाड़ को कैसा पैक कर यहाँ छोड़ेगा शायद. अच्छा उसका एंट्रेंस नीचे से शायद लिफ्ट है उसको, है ना? 10 यूरो का तो चार्ज होगा. ये दिख रही है, ये क्या है? नहीं कर लेते ना. ये भी यहाँ the final stop. हाँ ये है most SMP. This is a UFO, the top attraction, number 1 UFO, and this price is a €10 per person.
and this is the tallest area on Bratislava under the bridge. You can see the city both side of the river, and this is a river, this river same going to the Vienna, Budapest and Paris. ये देखा कि ये शिप है. Hope you like this video. Before leaving, please subscribe our YouTube channel. Till then, Jai Hind, Vande Mataram.